अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पावर एंड पॉलिटिक्स का थर्ड एंड लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। In this third and last part, we will be discussing the impression management, what it is, how it plays its role in organizational power and politics, और इसके ethicality भी हम डिस्कस करेंगे। इसके जो impression management techniques है वो भी डिस्कस करेंगे, how we can use that, and then at the end we will be discussing how we can have our own political career in an organization. So to start with the impression management. Impression management, what it is, it's a person uh, efforts to influence the another person interpretation of any other person, place or thing by controlling the information they receive. ये impression management एक effort है किसी दूसरे बंदे के बिहेवियर्स को या उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो वो इन्फ्लुएंस होती कैसे है परसेप्शन, जब हम उसका परसेप्शन मैनिपुलेट करते हैं। as we have discussed in the perception and individual decision making chapter and discussion, कि वहां पे हमने देखा था कि a person who is having a perception is gone through a process. उस प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज है वो सेंसरी इनपुट्स होते हैं, वो सेंसेशन होती है अबाउट द समथिंग। वो सेंसेशन प्रोसेस में जब मैनिपुलेशन होती है, इंप्रेशन मैनेजमेंट ट्राई टू मैनिपुलेट दैट सेंसेशन प्रोसेस, और वो मैनिपुलेट करके उस सेंसरी इनपुट्स को, जो कि बाद में जिसको हम मीनिंग असाइनमेंट के प्रोसेस से गुजारते हैं और वहाँ हम उसको मीनिंग असाइन करते हैं। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट में वो प्रोसेस जो है, और उस मीनिंग असाइनमेंट के बाद हमारी एक परसेप्शन बढ़ जाती है उस सर्टन पर्सन, प्लेस एंड एनीथिंग, इवेंट वगैरह के बारे में। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स जो कि यूज होती है उस प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ऑन द other side you can see an ad about the chocolate, where they are trying to promote what it is. Now this is how the good and the positives are being portrayed about the chocolates, that it's a romantic gift. It show you have a class, you have a class in the society, you are not an ordinary or a layman, and it has super taste and everybody likes chocolate, and it's have high cocoa content. This is what we uh, try to promote, to portray. Now the person who is seeing to this will be having a good and positive perception of the chocolate. But what are the facts about it? That it can make you fat, it can ruin your teeth, it can make kids hyperactive, and it is like a poison for dogs, etc. So these are facts which we are trying to oversimplify, or we manipulate it and we try to hide it and promote the positive things about it. So impression management is like that, कि जो हम दूसरे के जो परसेप्शन प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने गोल्स अटेनमेंट के लिए। So here are some impression management techniques. The first one is conformity. Conformity is when you are trying to second the persons who you want to have a good impression of yours, उसको आप सेकंड कर रहे हैं, उसके ओपिनियन को आप सेकंड कर रहे हैं, उसकी राय को आप उसकी तायीद कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो कह रहा है कि सर जो आपने प्लान बनाया है हमारे नए ऑफिस के लिए, इसके बेहतरीन तो बन ही नहीं सकता, and it's a sort of gratification, it's a form of gratification, it's a flattery type of thing. लेकिन we try to believe that, try to make that person believe कि जी आई एम विद यू, नो वरीज, मैं आपके साथ हूँ और आपकी बात जो है 16 आने सच्ची है, इसमें कोई देयर इज नो डाउट, यू हैव ब्रिलियंट स्किल्स एंड ऑल दोस। अभी हम चाहते हैं कि वो समझ ले कि आई एम हिज मैन, कि आई एम विद हिम, or there is no issue, whatever what may come, I'll be with that person. Second type of second technique is favor. Doing something nice to someone gain that person approval is a
that person's approval is a form of gratification as well. जब हम किसी दूसरे बंदे को फेवर दे रहे हैं और जाहिर ये करे कि इट्स नॉट अ फेवर, बट फिर उस बात में भी ये कह रहे हैं कि आपने मुझे चूंकि थोड़ा सा आपने मुझे वक्त दिया, आपने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दी, so it's a sort of token of thank you for that. For example, a salesperson says to a prospective client, I have got 2 tickets to the theater tonight that I can't choose. Take them. Consider it a thank you for taking the time to talk with me. अब यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है, जो सेल रेप है, वो बता रहा है अपने क्लाइंट को कि जी आपने चूंकि मुझसे बात की, मुझे टाइम दिया, तो उस टाइम क्या कि उसमें से मैं तो पैसे नहीं दे सकता, उसके तो मैं आपको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं कर सकता, बस एज थैंक यू टोकन ये 2 टिकट्स है जो मैंने लिए थे, मैं वैसे जा नहीं रहा थिएटर को, तो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच इट विद सम ऑफ योर गुड फ्रेंड. सो इट्स सॉर्ट ऑफ फेवर कि आप उसे बता रहे हैं कि जी आपने मुझे टाइम दिया, सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट एंड आई, so it's another sort of gratification as well. Excuses. When there something happened, something happened bad to you and to your organization, and you don't want to have the blame for it, or you may not want to be fixed for that. So उसमें से आप एक्सक्यूज करते हैं कि जी और एक्सक्यूज के साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये जो इशू हुआ है इसमें मेरा कसूर नहीं है, या ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि इस पे इतना जो है कंसर्न लिया जाए. फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर सेज to her boss that we failed to get the ad in the paper on time, but no one responded to those anyway. इसमें कोई इशू नहीं है, हम उस न्यूज़पेपर में अपने एडवर्टाइजमेंट तो पब्लिश नहीं करा सकते, बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न because that newspaper is not read by many people. Our newspaper in today's world are not read that much. उसके बजाय हम सोशल मीडिया किसी और मीडियम को यूज कर सकते हैं. So it's a defensive impression management technique when you are taking refuge in excuses, but you are not also want to be fixed for uh, that failure, that issue which have been come out. Apologies is another defensive impression management technique when you are admitting that you have done something bad to the organization, but then you are also asking for the pardon. Okay? You want to get to be pardoned for that action. For example, an employee says to his boss, I'm sorry, I made a mistake on the report. Please forgive me. So at the same time, as we have said, it's a defensive impression management technique. ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट की डिफेंसिव टेक्निक है जहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, अब उस गलत को हम छुपा रहे हैं, जो हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ माफी भी ले रहे हैं ताकि मुझे जो इससे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो न मिल जाए और अगला वाला समझ आए कि आई एम एडमिटिंग माय मिस्टेक, सो उसके दिल में भी जो है कोई नेगेटिविटी न रहे मेरे लिए. Then comes the self-promotion, highlighting your best qualities, displaying your deficits, downplaying your deficits, and calling attention to your achievement is a self-focused I am technique. ये वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम अपनी बेस्ट क्वालिटीज बताते हैं और जो हमारे नेगेटिव्स हैं वो उसको छुपाते हैं और जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि लुक आई हैव अचीव्ड दैट मच. और मैं जो हूँ तो आई एम वेरी स्किल्ड पर्सन, आई एम वेरी कॉम्पिटेंट, आई एम अ वेरी गुड टीचर, आई हैव नॉट ओनली हैव द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, rather I'm much more better than others because I have a background of psychology as well, and I'm good in teaching management as well, and I have been teaching the HRM and all those. So I'm trying to my HOD, head of department, and any other one, that I'm the good option for to teach the organization behavior because it's me, and I have been publishing in organization behaviors, and I have been developing case studies in this and that. So this is a sort of self promotion. For example, example is also another example is given as well.
Salesperson tells to his boss, Matt works unsuccessfully for 3 years to try to get that account. I saved it up in 6 weeks. I'm the best closer this company has. uh, मिस्टर एक्स वाई सी ने जो अकाउंट जो है वो 3 साल में नहीं किया और मैंने 6 महीने में इसको कर दिया. आई हैव डन दैट. जो 3 साल का काम था वो मैंने 6 महीने में कर दिया. सो देयर इज नो वन लाइक मी इन द होल ऑर्गेनाइजेशन. So I'm the best one, and so that means that self promotion is aimed कि जो दूसरा बंदा है, जो टारगेट है वो प्रेज करें हमारी हमारी एफर्ट्स को मान ले, हमारे अचीवमेंट्स को मान ले, हमारे क्वालिटीज को एक्नॉलेज करें. The next impression management technique is enhancement. Claiming that something you did is more valuable than most other members of the organization would think it's a self-focused technique. वो जो self promotion था ये भी self-focused impression management technique थी, और enhancement भी self-focused impression management technique है. जिसमें अब जो एजेंट है वो बता रहा होता है, जो इंप्रेशन बना रहा है, इंप्रेशन मैनेजमेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि आई एम द बेस्ट अमॉन्ग दीज अवेलेबल पर्सन, क्योंकि इनसे मैं अच्छा कर रहा हूँ. और ये भी है, माय कलीग्स आर गुड. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग माय कलीग्स आर गुड एट टीचिंग, बट देयर इज नो मैच ऑफ माइन because I have teach the subject which have never been taught by someone else. I have a diversified portfolio. मैंने ये भी पढ़ाया, मैंने वो भी पढ़ाया, and you can ask the student that how I have taught them, taught to them. Here is another example. A journalist tells has edited, my work on the celebrity divorce story was really a major boost to our sales. Even though the story only made it to page 3 in the entertainment section. एक जर्नलिस्ट है, वो अपने स्कोप को, अपनी फीचर को जो वो लेकर आया है अबाउट सेलिब्रिटी डाइवोर्स, तो वो डाइवोर्स की स्टोरी को वो कह रहा है कि दिस इज माय एबिलिटी दैट आई हैव डन दैट एंड इट्स बूस्ट्स आवर सेल्स. अगर इतनी बड़ी ये स्टोरी होती और इतनी बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस होती तो फ्रंट पेज या बैक पेज पे आती. ये सेकेंड पेज पे भी नहीं, इवन इट इज ऑन थर्ड पेज. सो दैट इज, इट मीन्स कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है, बट जर्नलिस्ट अपने एडिटर को बता रहा है कि जो मैंने काम किया है दैट इज ऑफ, यू कैन से कि very importance. So that important work shall be recognized. So enhancement also focus that my effort shall be recognized. I am putting more efforts than others, so I shall be distinguished among others. Flattery. Complimenting other about their virtues in an effort to make yourself appear perceptive and likable is an assertive आर्म टेक्निक. जब हम फ्लैटरिंग करते हैं, प्रेस करते हैं किसी बंदे को, तो वी आर आल्सो कि जी आई एम, यू कैन से एन एग्रीएबल पर्सन. I can be your teammate. I can be your good teammate because I'm recognizing your effort. So I'll be working very good with you if you include me with yourself, or you can consider me for another task because I'm a person who used to acknowledge the other's contribution. For example, a new sales trainee says to her peer, you handled that client complaint so tactfully. I could never have handled that as well as you did. जी आपने जिस तरह हमारे कस्टमर की शिकायत को हैंडल किया, मुझसे तो नहीं हो रहा था. टू बी ऑनेस्ट, मुझसे नहीं हो रहा था. क्योंकि अब नाउ यू आर ग्रेटिफाइंग दैट पर्सन, यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन, यू आर फ्लैटरिंग दैट पर्सन, his ability, his competence and his expertise that you have done very well. And even I couldn't do that. Exemplification is another impression management technique. Doing more than you need in an effort to show you're dedicated and hardworking, you are is an assertive techniques. So this is what we see कि जो जितनी हम efforts usually लगाते हैं, जितनी हमसे required है, हम थोड़ा उससे ज़्यादा लगाते हैं ताकि हमें जो है वो पता लग जाए कि जैसे
मैं ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय जो के ईमेल में गिवन है, एग्जाम्पल में गिवन है, एन एम्प्लॉय send emails from his work computer when he works late so that his supervisor will know how long he has been working. Arm routine है 9 to 5 o'clock, but the person is an office at 8 o'clock with some office work. अब वो 8 ओ क्लॉक या 9 ओ क्लॉक के दरमियान जो है 8 पी एम 9 पी एम को वो मेल करता है अपने सुपरवाइजर को विद एनी, आप समझे किसी भी बहाने से कि कोई चीज रिक्वायर थी या ये काम हो गया तो आई एम सेंडिंग यू फॉर दैट कि आप सुबह आए तो सुबह देख के पहला यही देख ले क्योंकि सुबह शायद मैं लेट हो जाऊँ ये वगैरह. सो वो ईमेल करता है कि जी, और ईमेल के साथ टाइमिंग आती है तो ताकि जो बॉस है उसको पता लग जाए कि आई वॉज देयर when even it was not the office timings. So now we turns back to the but what is the we can say the pros and cons of these pros and cons of these. So these impression management technique can be used in organization using organizational power in organization and in an organizational politics because whom we want to be affiliated उसके साथ gratification जिसको हमने साथ लेके जाना है उनको भी उसकी थोड़ी सी फ्लैटरी और सेल्फ प्रमोशन के आई कैन डू थिंग्स फॉर यू. सो मुझे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुकाम दे, एक बड़ा हैसियत दे दे. So all these impression management techniques are used in exercising power in organization and in politicking. politicking जिसे हम political behavior कहते हैं. So political behaviors जो है उसमें हमें ये impression management techniques किसी हद तक फायदा भी देते हैं और किसी हद तक it can be can say uh, backfiring as well. So we have to be very cautious while using these impression management. These impression management can be used in the interviews as well, that you may look like very professional through your dressing. You may you be perceived as an assertive person when the question being asked and you are responding to that. You must show some sort of gratitude towards the interviewing panel or interviewing person. But it should not be that much कि वो जो इंटरव्यू पैनल है वो कुछ समझने लग जाए कि इट्स ओवर शो जो है वो हो रहा है. और ये मोस्टली उन इंटरव्यूज में काम आता है जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, सच स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में नहीं होते. दूसरी ये है कि इन इम्प्रेशन मैनेजमेंट को कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी क्योंकि एज वी हैव सेड इन ओबी के देयर आर नो एब्सोल्यूट्स, देयर आर वेरी फ्यू एब्सोल्यूट्स इफ एनी इन ओबी. सो वो हम वी हैव टू कीप द कॉन्टेक्स्ट इन कंसिडरेशन कि किस कल्चर में देख रहे हैं. कल्चर क्या है जहाँ पर रैशनल को ज़्यादा वो किया जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म है, पावर डिस्टेंस क्या है, वहाँ पे जो अदर कल्चर वैल्यूज है वो क्या है. अगर वहाँ पे कलेक्टिविस्टिक कल्चर है तो ग्रुप नॉर्म्स इम्पोर्टेंट है, तो ग्रुप नॉर्म्स के हवाले से इंप्रेशन मैनेजमेंट करनी चाहिए या इंडिविजुअल के हवाले से. सो दीज थिंग हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग दीज इंप्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक in while exerting power in organizations and in politicking. Now comes the question to the ethicality of behaving politically. या पॉलिटिकिंग की एथिकलिटी की बात करते हैं कि क्या ये एथिकल है कि नहीं. सो तीन अगर ये जो बिहेवियर है ये अगर तीन क्वेश्चंस का जवाब यस में दे दे सो वी कैन से कि यस दिस बिहेवियर इज दिस एक्टिविटी, दिस पॉलिटिकल एक्टिविटी इज ethical. For example, the very first question is this political action motivated by self-serving interest to the exclusion of the organization goals? क्या ये इसमें सिर्फ मेरी बात हो रही है, क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल बिल्कुल एक्सक्लूडेड है? अगर इसका जवाब यस है सो स्ट्रेट फॉरवर्डली इट्स एन अनएथिकल. लेकिन अगर नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ बेहतरी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देन वी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये इंडिविजुअल्स के राइट्स को अफेक्ट तो नहीं करेगा. ठीक है जी. Does these political action respect the rights of the individual affected?
जिन जो जो इससे अफेक्ट होने जा रहे हैं उनकी राइट्स को रेस्पेक्ट करेगा या उनको डिफीट करने की कोशिश करेगा इन राइट्स को। अगर रेस्पेक्ट करता है तो इट विल गोज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग। अगर रेस्पेक्ट नहीं करता, रादर इट ट्राई टू डिफीट, then it's an unethical activity. So the third criteria is the political activity fair and equitable. अब ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका जो बेनिफिट है, वो कुछ लोगों के लिए होगा या इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड. So if it is across the board, it's ethical. If it is not, it is for few people, blue eyes के लिए है, तो then it will be an unethical activity. Okay, that was about the all that we have discussed कि जी पावर क्या है. पावर में फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स ये हमने डिस्कशन की. फिर उसमें हमने कहा कि जी इंप्रेशन मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं which we have to use and to get ahead in political organizational politics. But what about as an individual? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है. पॉलिटिक्स इज नाउ इन द पार्ट ऑफ द करियर. सो नाउ वी हैव टू प्लेस आवरसेल्फ एंड वेयर वी वांट टू बी. जैसे मैं काबे की जो टाइपोलॉजी थी जिसमें बात हुई थी गेम्समैन की, कंपनी मैन की, क्राउड्समैन की एंड जंगल फाइटर की. सो उसमें से फिर अपने चॉइस करना है कि वेयर वी वांट टू बी. ठीक है जी. जंगल फाइटर में नॉट बी द केस कि जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको वो हो. इट में बी द गेम्स मैन इज वेरी गुड वन. क्राउड्समैन भी आप सोच सकते हैं यू हैव द कॉम्पिटेंस लेवल एनफ कि आप एपॉलिटिकल या लेस पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं. बट एट एनी केस यू हैव टू बी इन द पॉलिटिक्स लीस्ट और मच मोर. ठीक है जी. सो ये डिपेंड करता है कि आपकी एम्बिशन क्या है. यू वांट टू बी हायर इन योर कैरियर प्रोग्रेशन और नॉट. आप who has the power to help you achieve them. तो किसके पास who is powerful. जैसे हमने पावर के डिस्कशन में कहा था कि we have to show gratitude to the powerfuls. ठीक है जी. पॉलिटिकल बिहेवियर में भी हमने ये कहा था कि जिनके पास पावर है we have to be showing a gratitude behavior. ठीक है जी. And what is your relationship to these people who are enjoying the power? So इस सब का जवाब जो है you can get it through your own political mapping. अब what is a political map? You have to draw a map of yourself and your connection with others. Like here is one of the area of detail. Here it is given. यहाँ पे जो है green है. Green is a close connection. For example, you as a Jamie from operation department. Okay जी. अब कैसे इसने लोगों के साथ कनेक्ट होना है. ग्रीन इज अ क्लोज कनेक्शन, गोल्ड इज अ लूज कनेक्शन एंड हैज अ नो कनेक्शन. इवन जो हमने एक और उसमें कहा था सोशल नेटवर्किंग में. सो सोशल नेटवर्क के जरिए के साथ इस तरह ये एक पॉलिटिकल मैप है जिसमें हमने देखना है किसके साथ हमारा कितना कनेक्शन है. फॉर एग्जांपल जामी के कनेक्शन जो ऑपरेशंस में है और यहाँ पे वहाँ पे यू या I am having a relationship with Jamie. अब Jamie is who is he. अब हमने हर एक के साथ कंटेक्ट देखना है कि बिकॉज जैमिंग के साथ मेरा क्लोज कंटेक्ट है. जैक के साथ भी, लैन के साथ थोड़ा सा लूज है और मार्टी एंड जिया के साथ जो है वो इतना नहीं है. तो आई एम गोइंग टू एनालाइज दीज कि जी जैमिंग का फिर आगे किससे कहानी है. तो जैमिंग के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में फिर वो एना के साथ है, वो सीनियर वीपी जैमिंग बॉस है. फिर मार्क है जो जैमी का फॉर्मर को वर्कर है. लेकिन उसके साथ मार्क के साथ उसकी अच्छी है. सो नाउ you can have your own, you can say, social network which have a political सेंस एज वेल. सो उस हवाले से हमने अपनी सोशल नेटवर्क का पॉलिटिकल में बनाना है जिसमें वी वांट टू हैव कि जो हमारा एरिया जो लोग ऑफ जो पीपल ऑफ कंसर्न है उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कितने हैं और कितने हम उससे को यूज करते हुए आगे जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में. So these what we have discussed in this whole three lectures. We start with the power. The power है क्या? How it has to be operationalized.
what are the key content, that what we used to say dependency, and we used to say that the power is a function of dependency. तो उसके बाद हमने पावर के बेसिस पढ़े, पावर टैक्टिक्स पढ़ी, टैक्टिक्स को यूज किस तरह करते हैं, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी. देन वी मूव फॉरवर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की हमने डिटेल पढ़ी कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स होती क्या है, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इज देयर, हाउ इट इज बीइंग जनरेटेड, हाउ इट इज बीइंग, इसकी जेनेसिस कैसे होती है, और फिर इसके अफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और हमें एज एन इंडिविजुअल इसके क्या अफेक्ट हो सकते हैं, हाउ एज एन एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉयज आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, and how we can manage that as well. Along with that, in the last today's lecture, we were discussing the impression management technique as well. कि जी हमने जब पावर एग्जर्ट कर रहे हैं या बिहेविंग पॉलिटिकली हो बिहेव कर रहे हैं या पॉलिटिकिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट को कैसे यूज करना है हमने. सो वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट एज वेल. और उसके बाद हमने फिर ये देखा कि एथिकलिटी ऑफ पॉलिटिकिंग क्या है, कैसे हम असर्टन करेंगे कि इज दिस पॉलिटिकिंग इज एथिकल एंड दिस इज नॉट. नाउ वी कम्स के जी इन सारों के इम्प्लीकेशन फ्रॉम ओबी पर्सपेक्टिव मैनेजर्स के लिए क्या है. So the very first is to maximize your power, increase other dependence on you, because we have discussed the power is a function of dependency. Okay. And then, for instance, increase your power in relation to your boss by developing unneeded knowledge or skills. जो हमने कहा था कि जो expert knowledge है वो अगर आप gain कर लेते हैं, which has no substitute, ठीक है जी, उसकी importance भी है और उसकी scarcity भी है, then the power, even the boss, your boss will be dependent on you. Then another is you will not be alone in attempting to build your power base. Power base अकेले नहीं बनाई जा सकती. Your peers, your boss, even your subordinate will be taking part in that power base. Others, particularly employees and peers, will be seeking to increase your dependence on them, while you are trying to minimize it and increase their dependence on you. Everyone is in getting power. सो वो स्ट्रगल में होता है कि मेरी जो पावर है वो बढ़ जाए, तो पावर इसी तरह बढ़ेगी कि उन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाए. सो एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई to make others dependent on them, and you and I as a person will be trying to make other dependent on me, ताकि मेरी जो पावर है, सो ये पावर स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है. इसमें देखना आपने कि आपने पावर बेस कैसे बनानी है. Try to avoid putting others in a position where they feel they have no power, because those people who start thinking that they are powerless, they are the more dangerous people then, because उनके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए, तो फिर उनके पास एक काम करने के लिए रह जाता है, that is to rebel. Either one extreme is slavery type of thing, master slave relationship, or the other is a rebellion thing. So mostly जब वो powerless महसूस करते हैं, that they feel threatened, then the threatened you have done respond into the negative things. By assessing behavior in political framework, you can better predict the action of other and use information to formulate political strategy that will gain advantages for you and your work unit. जब हम पॉलिटिकल मैपिंग कर लेते हैं और हमें फिर उसके हवाले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमें पता होता है कि किसके पास कितना, कौन कितना पावरफुल है इन ऑर्गेनाइजेशन, तो देन वी कैन हैव अ गुड आइडिया कि whom कैन डू व्हाट. यदि अब ये आइडिया हो जाए और फिर हो जाए कि उसकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कौन सा, ये भी पता चल जाए, देन वी कैन यूज दीज इंफॉर्मेशन टू फॉर्मुलेट आवर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जो हमें जो हमारे लिए और हमारे वर्क यूनिट के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारे सेक्शन के लिए बेनिफिशियल हो. Consider that employees who have poor political skills are unwilling to play the politics game, generally relate perceived organization politics to lower job satisfaction and self-reported performance, increased anxiety, and high performance. Therefore, if you are adept at organization politics, help others understand the importance of becoming politically savvy. अगर वो लोग, जैसे हमने मैकियावेली के उसमें कहा था कि क्राफ्ट्समैन है जो कि बहुत
स्किलफुल होते हैं और एपॉलिटिकल टाइप के होते हैं या जो लोअर होते हैं, वो समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स विल बी हार्मिंग देम and will be harming their position as well. So उनको ये इम्पोर्टेंस बतानी है पॉलिटिकल savvy बनने की, politically active बनने की, because if you are not in politics, you can thrown be anytime. But if you are in organizational politics, you will be backed by a group, by a certain एम्प्लॉयज सर्टन एम्प्लॉयज सर्टन ग्रुप जो है वो बैक करेगा, सो आपको कुछ कहना जो है वो मसला वो कर जाएगा. So that is how those people who are apolitical are less involved in the politics. So वो समझते हैं कि politics is not that important. So I have to keep my uh, वर्किंग ओनली. देखिए उसको भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना ज़रूरी इसलिए है कि उसको भी जो पॉसिबल थ्रेट्स है वो ना मिले और उनको जो पॉसिबल नेगेटिव्स है उसका वो अफेक्ट उस पे ना हो. सो उसको भी पॉलिटिकली हमने पॉलिटिकली एक्टिवेट कराना है. सो दैट वाज ऑल फॉर द organizational power and politics series. And that was the end. We have discussed the power in detail. Then we come to the political behaviors, also discussing the impression management. और हमने फिर उसमें डिफरेंट टेक्निक्स भी पढ़ी. एंड मैं इस कोट के साथ we will close it. Move in silence. Only speak when it's time to say checkmate. So it's about the politicking, political strategies that you need not to be loud to all. कि जी आप हमेशा बोलने वाले रहे, इस तरह चाल चले कि जब आप बोले तो ये उस वक्त बोले जब आप शहमात दे रहे हो, शह दे रहे हो, शहमात जो है वो दे रहे हो, चेकमेट आपके पास ओपिनियन बता सके कि जी शहमात दे दी है, नाउ इट्स योर टर्न. So that was all from today in this lecture. Thank you.